Good morning, children. This is your sixth poem for class 10th, and this is what Amanda by Robin Klein. The name of the poem I've read here. Amanda by Robin Klein. An American poem. Oh, sorry, American is not America. Robin Klein. His, as it is from man textbook, we need to know about details in the poet as well. So the poet is from Australia. You know that the three native speaker country of English language is Britain, United Kingdom, America, and Australia. So he is from Australia and mostly known for his child stories and poem. Children books he wrote and wrote many fiction for adult Now we are going to explain line wise Amanda reference explanation. And there is Amanda is a girl who was thinking about a free and comfortable life, but she was living in a restricted circumstance. Always every child, not only child but adult also, need to follow some code of conduct what implemented by the society, by the family. So she trying to break that rule and come to the open ground where no restriction, no discipline as well. So this is what reality versus striving to a carefree and free life. So contrast between reality and imagine here in the poem you will find. So main theme is about what Amanda wish and what reality. A contrast between wish and reality. Wish versus against reality. Wish versus reality. What she wished and what really she is. That is what depicted here in the poem. She wished to be a mermaid, sometimes she wished to fly, sometimes she wished to play, sometimes she wished to run. But what the reality is that she was rebuked, scolded by her mother not to cut the nail, not to bite the nail, and like that. Oh, sorry. So this is what the poem presented here. I am explaining it line wise. Take the textbook and follow the lines as well. So very fast, and Amanda is a girl about whom this poem is. This is a child. First sentence: don't bite your nails, Amanda. नेल्स को मत काटो दांत से, जैसे हम लोग काटते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे के देखे हैं. तो ये don't hunch your soldiers, don't bend or move your soldiers. This is a little girl always busy doing her own work, and sometimes they are mentally as well physically playful, but always full of movement, full of life. And so हर टाइम soldiers को move कराना, bend कराना या ये nail को दांत से काटना, ये सब मना करते हैं. This is what the sentence by her mother. Soldiers, stop that slouching and sit straight, moving lazily, sitting and doing nothing, moving the soldiers and by biting the nails. So she stopped it and sits up straight. Amanda, this is what the reality of Amanda. Her mother rebuked and instructed always to do something good. But next in a bracket, the wish of Amanda is given in the bracket. That is, there is a language, emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. वो क्या सोचे खुद को एक मार्मेड. कंपैरिजन अगेन, फिगर ऑफ स्पीच इज कंपैरिजन मार्मेड के साथ. मार्मेड यू नो दैट हाफ फिश हाफ ह्यूमन. तो ये मार्मेड टाइप को खुद को कंपेयर किया जो ओसी में या ओशियन में फ्रीली मूव करेंगे, ड्रिफ्टिंग ब्लाइसफुली. तो स्लाउचिंग, सीटिंग लेजीली, लैंग्वेज, रिलैक्स्ड मूड में
नहीं बैठा ना, तो एक वास्ट रिलैक्स ओशियन जहाँ पर वो फ्रीली मूव करेंगे, जहाँ पर उसकी मम्मी की वही रेस्ट्रिक्शन ऑलवेज एब्यूजिंग एंड इंस्ट्रक्शन नहीं रहेंगे, where she will be free, a wish to be free without any instruction, without any restriction. That is what contrasted image here presented. Inhabitant, that is what who live in the living or dwelling like that. So blissful, happily, she want to live blissfully. These are the difficult word from these lines. Next, again, so in the first part you find a contrast between wish and reality. Here figure many types of figure of speech used हुआ है, literary device जो बोलेंगे उसमें anaphora, repeated use of words start two or more lines. Don't bite, don't hunch, ये don't repeat हुआ, इसको anaphora figure of speech में बोलते हैं. ये difficult type of figure of speech generally नहीं आते class 10th में, but anaphora ये सेम वर्ड रिपीटेड तब एनाफोरा बोलते हैं, और सेम वर्ड रिपीटेड होता है तब भी उसको रिपीटेशन भी बोलते हैं. तो एनाफोरा. नेक्स्ट इसमें राइम स्कीम ए बी ए सी सी सी, अमेंडा अमेंडा स्ट्रेट अमेंडा. मेटाफोर ऑल्सो यूज हियर. ये मेटाफोर यू हैव टू हियर एमरल्ड, द वर्ड एमरल्ड, सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमरल्ड. एमरल्ड वन टाइप ऑफ ज्वेलरी होता है एमरल्ड. तो ये एमरल्ड वन टाइप ऑफ ज्वेलरी होता है जिसके साथ एक ग्रीन कलर ऑफ सी को कंपेयर किया गया है. एमरल्ड ग्रीन कलर ऑफ सी होता है जिसके साथ ग्रीन कलर का ज्वेलरी होता है जिसके साथ ग्रीन कलर ऑफ सी कंपेयर किया गया, और ये कंपेयर इनपुट करके रखा गया है. दैट इज व्हाट implied here, and that's why this is a metaphor. Figure of speech used here is metaphor. Next, again that contrasted image to first her reality and her wish or imaginary that is given here. So and again here one more marmaid को जो बताया मैं, marmaid, this is a figure of speech used here is marmaid का रूप लेकर. हाँ, marmaid figure of speech is illusion, 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 an imaginary presentation, उसको illusion बोलते हैं figure of speech में. तो marmaid is a illusion figure of speech presented here. Next, did you finish your homework? अपना होमवर्क कंप्लीट किया हो. दिस इज व्हाट अगेन रिमाइंडिंग ऑफ आवर वर्क, रेस्ट्रिक्शन, इंस्ट्रक्शन, रिव्यूड, स्कॉल्डेड एंड फाइनली रिमाइंडिंग ऑफ द वर्क. दिस थिंग्स ही डिड नॉट लाइक एट ऑल. डिड यू टाइडी योर रूम्स? रूम को ठीक ठाक किए हो अरेंज? अमेंडा कैन क्वेश्चन मार्क. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज. शूज को की क्लीन करने के लिए भी बोला था. दिस आर द व्हाट हर मदर, but she is not doing it. Amanda, and again the bracket given about her imaginary, about her wish, what she wished in response of that. I am an orphan. अगर मैं एक बेसहारा बच्चे होते जिसके पेरेंट्स नहीं होते तो क्या होता है? रोमिंग द स्ट्रीट फ्रीली विदाउट दिस इंस्ट्रक्शन एंड वट रिव्यू, स्कॉल्डिंग और रिमाइंडिंग द वर्क. कुछ वर्क ही नहीं रहता स्ट्रीट. आई पैटर्न शॉक डस्ट विथ माई हाउस्ट बियर फुट. ये ओपन खाली पैन में मैं से धूल लगाते, जूता पहनने की जरूरत भी नहीं रहता, जूता क्लीन करने का भी जरूरत नहीं रहता. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. तो ये साइलेंस बहुत सुंदर होता है एंड स्वीट ही होता है जहाँ पर कोई रिव्यूट और हमेशा ये रिमाइंडिंग काम नहीं रहेंगे. और तो दैट इज व्हाट हुस्ट क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, जहाँ शांति जाएगा. हुस्ट HUSHED, हुस्ट मीन्स शांत एंड peaceful place, उसको suggested here. The figure of speech is generally here used anaphora, repetition हुआ है. Amanda word repeated here, जो word repeat होता है उसको repetition बोलते हैं figure of speech में. Amanda word repeat. Metaphor also, silence is golden, here metaphor again. Silence is said to glorious like golden color. Silence के साथ glorious को compare किया गया है golden को. So metaphor again here used metaphor. तो फिगर ऑफ स्पीच को आप याद रखेंगे क्योंकि क्लास 10th में एक दो आ ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. अगेन नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम, डोंट ईट दैट चॉकलेट. ये जो हमेशा बोलते रहेंगे ये मत करो वो मत करो, एंड दिस वर द थिंग्स शी रियली इरिटेटेड, गुस्सा आ जाता है उसको. अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी. अमेंडा ना एक्नी को याद रखो. एंड विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. जब उसको कोई डांटते हैं या बात करते हैं उसकी मम्मी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आंख नीचे करके लेते हैं.
और तब उसको फिर उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी रिमाइंड करते कि मेरे की तरफ देखो. दैट इज व्हाट अमेंडा. Then Amanda's again her imaginary given in the bracket her wish. I am Rapunzel. Rapunzel a girl in fairy tale. एक कहानी का कैरेक्टर वो Rapunzel है. मैं एक आई हैव नॉट केयर, मेरे को कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं, कोई थिंग्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. कहानी का सब थिंग्स इमेजिनरी सब कुछ हो जाते हैं. लाइफ इन ए टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर. ट्रंक्विल बहुत शांति. और वही रापुंजल जो एक प्रिंसेस होता है टावर में बंद करके रखे हैं, उसको दानव आके मार देंगे इस डर से. फिर एक प्रिंसेस आते हैं. दैट इज द स्टोरी है. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. ये डाउन हेयर उसको कोई हेयर काट के वो टावर से उसको बचा देते हैं हेयर के थ्रू से, तो कोई उसको हेयर भी नहीं काटेंगे इस टाइप का. दैट इज व्हाट इमेजिनरी. शी इमेजिन्ड हरसेल्फ टू बी द गर्ल ऑफ स्टोरी. दैट इज व्हाट रैपुंजेल. एक्नी पिम्पल्स की बात की है ना, तो अब एक्ने दैट मीन पिम्पल रैपुंजेल गर्ल फेयरी टेल ब्रदर्स ग्रीम. तो अगर चॉकलेट खाएंगे तो पिंपल हो जाएंगे. एंड अपना काम सही तरीके में करो और मेरे तरफ देखो. जब डांटते हैं पेरेंट्स इसी टाइप का, समटाइम टीचर भी बोलते हैं मेरे तरफ देखो. तो ये सब जब उसके पेरेंट्स मदर डूइंग एट दैट टाइम शी थॉट हरसेल्फ टू बी रैपुंजेल. एंड this is what the third part of the poem completed here. Next literary device again illusion imaginary. I just things जैसे mermaid एक illusion है, Rapunzel another illusion. That is what a figure of speech used here. And assonance, the vowel sound repeated here. I am speaking to you. Consonants sound are repetition among the word again repeated here. Next the fourth part and शॉकिंग एट वंस. अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी. अपना मूड में रहते हो आप, बेड मूड में. दैट इज व्हाट बेड मूड. शॉकिंग मीन्स बेड मूड एंड मूड में रहते हैं. अमांडा यू एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू. और इतना कुछ डांटने के बाद उसकी मामी लास्ट में बोल रहा है मूड को ऐसे खराब करके मत रहो, लोग क्या सोचेंगे कि मैं आपको डांट रहा हूँ, और एक्चुअली सच में ही डांट रहा है. तो दैट इज व्हाट अगेन ए फनी थिंग्स प्रेजेंटेड एट द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम. एंड अमेंडा सो शॉकिंग एल साउंड साइलेंट रहेंगे ना. शॉकिंग इन बी ए बैड मूड, एल साउंड साइलेंट एंड एलिटरेशन हियर. स्टॉप दैट शॉकिंग. एस साउंड रिपीटेड हियर. एक पार्टिकुलर कॉन्सोनेंट जब रिपीट होता है एक साउंड तब उसको एलिटरेशन बोलते हैं. जब वर्ड रिपीट होता है उसको रिपीटेशन बोलते हैं. और जब सेंटेंस रिपीट होता है उसको अनदर फिगर ऑफ स्पीच जिसको रेफ्रेन बोलते हैं. रिफ्रेन. सो ये 3 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आप सेपरेटली याद रखेंगे. एलिटरेशन कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है. रिपीटेशन जहाँ पर वर्ड रिपीट होता है. रिफ्रेन जहाँ पर सेंटेंस रिपीट होता है. तो दिस इज अनदर फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन हियर. And these are the 4 parts of the poem. So first part again rebuked her for biting and sitting relaxedly. At that time she thought herself to be mermaid. Second time so and remind her about her homework and polishing shoes or cleaning shoes. Then she thought herself to be Rapunzel, the story, the character of the story. And again that is what her imaginary things. Again in the vast ocean she thought herself to be mermaid. One time she considered herself to be an orphan जहाँ पर parents नहीं. So in the poem you found 3 imaginary things she wished to be. Once she wished to be a mermaid, again she wished to be a Rapunzel, again she wished to be a orphan. 3 things she wished here. And want, that is a free and delight or enjoyable life, but reality is something different. So this is what contrasted of wish and reality, imaginary and reality. And this is where the poem completed. So please go through the poem line wise and you will find again. If any doubt, ask me here.